वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ओम भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। हम्म। जी। 34। 1.34। हाँ, चलो जी। पढ़ो। हम्म। जी। हम्म। पढ़ो। हम्म। अपि श्रीदास्ते भगवान सुखम वो यह सात्वताम का, काम दुधो निरुद्धा यमा मनन्ति स्म हि शब्द योनिम मनोमयम सत्व तुरीय तत्वम। अपि स्वीदास्ते भगवान सुखम वो यह सात्वताम काम दुधो दुघो निरुद्ध यमा मनन्ति स्म हि शब्द योनिम मनोमयम सत्व तुरीयतत्वम। जी। May I inquire whether is doing well? He is the fulfiller of all the desires of the pure devotees and has been considered from your to be cause of the Rig Veda, the creation of the mind, and the fourth plenary expansion of Vishnu. हम्म। Purport. Adi Chaturbhuj, the original expansion from Baldev, are Vasudev, Sankarsan, Pradumna, Aniruddha. All of them are Vishnu Tattvas or non-different personalities of Godhead. In the incarnation of Sri Ram, all these different expansions appeared for particular pastime. Lord Rama is the original Vasudeva, and his brothers were uh, Sankarsan, Pradyumna, and Aniruddha. Aniruddha is also the cause of Mahavishnu, from whose breathing the Rig Veda appeared. All this is nicely explained in the Makande Puran. मार्कंडेय पुराण। Acha, Markandeya Puran. In the incarnation of Lord Krishna, Aniruddha appeared as the son of the Lord. Lord Krishna in Dwarka is the Vasudeva expansion of the original group. The original Lord Krishna never leaves Golok Vrindavan. Shah. The original Lord Krishna never leaves Golok Vrindavan. All the plenary expansions are one and the same Vishnu Tattva, and there is no difference in their potency. अब ये जी। मतलब इनका चूंकि काफी ज्यादा नॉलेज है ना इन सब चीजों की, तो लिख रहे हैं, ये बता रहे हैं जी। हमको। बिल्कुल जी। पक्की जी। बात बता रहे हैं। हाँ। हम्म। 35। हम्म। अपि स्वीदनीये च निजात्म दैवम नन्यवृत्त्या समनुवृता ये हृदीक सत्य आत्मज चारु देशण गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य। अपि स्वीदन्ये च निजात्म दैवम्न्या वृत्त्या समन्वृता ये हृदीक सत्यात्म जचारुदेष्णा गदगदा गदागदयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य। Hmm. O sober one, others such as Hridika, Kardeshna, Gad, and the son of Satyabhama, who accept Lord Sri Krishna as the soul of the self and thus follow his path without deviation, are they well? हम्म। जी। हम्म। ठीक है। आपकी। जी। हम्म। हम्म। आपकी स्वदो भर्याम विजया विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुं दुर्योधन दुर्योधन तप तप्यत यतिभायां
साम्राज्य लक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या अपि स्वदो भर्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुं दुर्योधनोत्तप्यत सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। Also, let me inquire whether the Maharaj Yudhishthir is now maintaining the kingdom according to religious principles and with respect for the path of reason. Formerly, Duryodhan was burning with envy because Yudhishthir was being protected by the arms of Krishna and Arjun as if they were his own arms. Purport. Maharaja Yudhishthir was the emblem of religion when he was ruling his kingdom with the help of Lord Krishna and Arjuna. The opulence of his kingdom surpassed all imagination of the opulence of kingdom of heavens. His actual arms were Lord Krishna and Arjuna, and thus he surpassed everyone's opulence. Duryodhan, being envious of his opulence, planned so many schemes to put Yudhishthir into difficulty, and at last the battle of Kurukshetra was brought about. After the battle of Kurukshetra, Maharaja Yudhishthir was again able to rule his legitimate kingdom and reinstated the principle of honor and respect for religion. That is the beauty of kingdom ruled by a pious king like Maharaja Yudhishthir. हाँ, ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूँ। है जी। किम वा कृताघेष्वघमत्यमर्षि भीमो हिव दीर्घतं व्यमुच्यत यस्याघ्निपातं रणभूर्णसेः मार्गगदायाश्चरतो विचित्रम्। जी। किम वा कृताघे कृताघेष्व घमत्यमर्षि भीमो हिव हिव दीर्घतम व्यमुच्यत यास पातम रण भूर्णः सेहे मार्गम गदायश्च चरतो विचित्रम। Please tell me whether the unconquerable Bhim, who is like a cobra, has released his long cherished anger upon the sinners. The field of battle could not tolerate even the wonderful playing of his club when he stepped on the path. Purport. Vidura knew the strength of Bhim. Whenever Bhim was on the battlefield, his steps on the path and the wonderful playing of his club were unbearable for the enemy. Powerful Bhim did not take steps against the son of Dhritarashtra for a long time. Vidura's inquiry was whether he had yet released his anger, which was like that of a suffering cobra. When a cobra releases a venom after long cherished anger, its victim cannot survive. यहाँ पर ना ये जो है ना, विदुर जी जो है, ये सारा कुछ पूछ रहे हैं उद्धव से। अच्छा, विदुर तो चले गए थे महाभारत के स्टार्ट होने से पहले ही जंगल में, है ना, तीर्थ यात्रा पे चले गए थे। उनको पता नहीं है कुछ भी कि महाभारत खत्म हो चुकी है। जी। और बल्कि क्या नाम है, महाभारत खत्म होने के बाद में भी काफी आगे बढ़ गए हैं, है ना। जी। उद्धव, है ना, तो उद्धव जी से सब पूछ रहे हैं। कच्चिद्य शोधारण यूथपानां गांडीव धन्वोपरता रास्ते अलक्षितो यच्छ्रकूटगूढ़ो माया किरातो गिरीश स्तोष। जी। कच्चिद शोधा रथ यूथपानाम गांडीव धन्वो रास्ते अलक्षितो यक्षर कूट गूढ़ो माया किरातो गिरीश स्तोष। Please tell me whether Arjun, whose bow bears the name Gandiv and who is always famous among the chariot warriors for vanquishing his enemies,
is doing well. He once satisfied Lord Shiva by covering him with arrows. When Shiva came as an unidentified false hunter, Hmm. Lord Shiva tested Arjun's strength by picking a quarrel with him over a hunted boar. He confronted Arjun in the false dress of a hunter, and Arjun covered him with arrows until Lord Shiva was satisfied with Arjun's fighting. He offered Arjun the Pashupati weapon and blessed him. Here, Vidur inquired about the great warrior's well being. Hmm. Text 39. जी. Yamavut isvit nayo prithaya पार्थैर वृत्तो पक्षभि पक्षभिराभिर्षिणीव रेमात् उद्याय मृधे स्वरिक्थम परात्सु परात्सु पर्णाविव वज्रने ववक्वात Hmm. वज्र त्रात जी. यमाभूत स्त्विन स्तुन्यो उठाया पार्थ व्रत पार्थ व्रतो पक्ष्म भीर क्षिणीव रीमा उद्दाय मृधे स्वरिक्थम परास परात्सु सुप एक मिनट परासु पर्णाव्यु वज्री 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 त्रात जी. Are the twin brothers who protected by their brothers? Are the twin brothers who are protected by their brothers doing well? Just as the eye is always protected by the eyelid, they are protected by the sons of Pritha, snatched back their rightful kingdom from the hands of their enemy Duryodhana. Just as Garuda snatched nectar from the mouth of Indra, the thunderbolt carrier. नकुल और सहदेव के बारे में पूछ रहे हैं. Indra, the king of heaven, carries a thunderbolt in his hand, Vajra, and is very strong. Yet Garuda, the carrier of Lord Vishnu, was able to snatch nectar from his mouth. Similarly, Duryodhan was as strong as king of heaven, and still the sons of Pritha, the Pandavas, were able to snatch away their kingdom from Duryodhan. Both Garud and Partha are pet devotees of the Lord. And thus it was possible for them to face such strong enemies. Vidur's inquiry was about the youngest brothers of the Pandavas, namely Nakul and Sahadev. These twin brothers were sons of Madri, the step mother of the other Pandavas. But although they were step brothers, because Kunti took charge of them after departure of Madri with her husband Maharaja Pandu, Nakul and Sahadev were as good as the other three Pandavas, namely Yudhishthir, Bhim, and Arjun. The five brothers are known in the world as regular brothers. The three elder Pandavas took care of the younger brothers just as the eyelid take care of the eye. Vidur was anxious to know whether after winning back their own kingdom from the hands of Duryodhan, the younger brothers were still living happily under the care of the elder brothers. जी. सारा बता दिया उन्होंने, है. माद्री ने मतलब सती हो गई थी उनके साथ पांडु के जाने के बाद, है ना. और कुंती नहीं हुई थी क्योंकि बच्चे छोटे थे. जी. अब पढ़ो तुम्हारा नंबर. जी, पढ़ रहे हैं जी. जी. अहो प्रथापि
ध्रियते ध्रियतेर भर्गकार्थे राजर्षि वरेण विनापितेन य स्तव वेक वीरो धीर्यो विजिज्ञे धनुर्द्वितीयः ककुभश्च त्रस्रः। अहो प्रथापि ध्रियते धृते भकार्थे राजर्षिवर्येण विनापि तेन यस्त्व एक वीरो धीरार्थो विजिज्ञे धनुर्द्वितीयः ककुभश्च तार्षः। O my lord, is Pratha still living? She lived only for the sake of her fatherless children. Otherwise, it was impossible for her to live out without King Pandu, who was the greatest commander and who alone conquered the four directions simply with the help of the second bow. Purport: a faithful wife cannot live without her lord, the husband, and therefore all widows used to voluntarily embrace the burning fire which consumed the dead husband. This system was very common in India because all the wives were chaste and faithful to their husband. Later on, with the advent of age of Kali, the wives gradually began to be less obedient to their husbands, and the voluntary embrace of the fire by the widow became a thing of the past. Very recently, the system was abolished since the voluntary system had become a forcible social custom. When Maharaja Pandu died, both wives, namely Kunti and Madri, were prepared to embrace the fire. But Madri requested Kunti to live for the sake of the younger children, the five Pandavas. This was agreed upon by Kunti at the added request of uh, Vya- uh, व्यास Vyas Vyasdev. In spite of her great bereavement, Kunti decided to live, not to enjoy life in the absence of her husband, but also to give protection to the children. This incident is referred to here by Vidur because he knew all the facts about his sister-in-law Kunti Devi. It is understood that Maharaja Pandu was a great warrior and that he alone, with the help of bow and arrow, could conquer the world's four directions. In the absence of such a husband, it was almost impossible for Kunti to live on even as a widow, but she had to do it for the sake of five children. बिल्कुल ठीक। Hmm. सौम्य अनुशोचे तमधा पतंतम भात्रे भात्रे भ्रात्रे परेताय विद्रुहे यह निर्यापितो येन सुहृदस्य सुहृदत् स्वपुर्या अहम स्वपुत्रान् समनुव्रतेन। सौम्यानुशोचे तमुध पतंतम भ्रात्रे परेताय विदुद्रहेयः निर्यापितो येन सुहृत् स्वपुर्या हाँ। अहम स्वपुत्रान् समनुव्रतेन। O gentle one, I simply lament for him, Dhritarashtra, who rebelled against his brother after death. By him I was driven out of my own house, although I am his sincere well-wisher, because he accepted the line of action adopted by his own sons. Purport: Vidit did not ask about the welfare of his elder brother because there was no chance of his well-being, only news of his gliding down to hell. Vidur was a sincere well-wisher for Dhritarashtra, and he had a thought about him in the corner of his heart. He lamented that Dhritarashtra could rebel against the sons of his dead brother Pandu, that he could drive him Vidur out of his own house on the dictation of his crooked sons. In spite of these actions, Vidur never became an enemy of Dhritarashtra but continued to be his well-wisher. And at the last stage of Dhritarashtra's life, it was Vidur only who proved to be his real friend,
Such is the behavior of Vaishnava like Vidur. He desired all good, even for his enemies. बिल्कुल। चलो। जी। सोहम हरेर मृत्यु विडम्बनेन दृश्यो नृणाम चालयतो विधातु नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रासाद 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 च रामि पश्यन् गत विस्मयोत्र। हम्म सोहम सोहम हरेर मृत्य विदाम्बनेन दृशो निर्णाम चालयतो विधातुः नानोपलक्ष्य पदवीं प्रसादाच्चरामि पश्यन् गत विस्मयोत्र। जी। Translation. I am not astonished at this, having traveled over the world without being seen by others. The activities of the personality of Godhead, which are like those of a man in his mortal world, are bewildering to others. But I know of his greatness by his grace, and thus I am happy in all respects. Purport. Although he was the brother of Dhritarashtra, Vidur was completely different. By the grace of the Lord Krishna, he was not foolish like his brother, and thus his brother's association could not influence him. Dhritarashtra and his materialistic sons wanted to falsely lord it over the world by dint of their own strength. The Lord encouraged them in this, and thus they became more and more bewildered. But Vidur wanted to achieve sincere devotional service of the Lord and therefore became a soul absolutely surrendered to the absolute personality of Godhead. He could realize this in the progress of his pilgrim's journey, and thus he was free from all doubts. He was not at all sorry to be bereft of his heart and home because he now had experienced that dependence on the mercy of the Lord is the greatest freedom than so-called freedom at home. He uh, he he was not at all sorry to be bereft of his hearth and home because he now had experienced that dependence on the mercy of the Lord is a greater freedom than so-called freedom at home. A अभी person है ना, should not. यही यही जो हम लोग अभी भी सब लोग यही सोचते हैं, क्या नाम है, मतलब जो लोग शादीशुदा हैं, हाँ। ये क्या नाम है, उनके पास बड़ा फ्रीडम है, मतलब बहुत हम्म। सिक्योरिटी है, फ्रीडम हम्म। है, हम्म। एंजॉयमेंट है, जॉय है बिल्कुल। द सिक्योरिटी ऑफ देयर। हाँ। यहाँ पे हर्थ का मतलब जो है ना, क्या कहते हैं, हर्थ भी वर्ड यूज किया, हर्थ एंड होम। हर्थ का हाँ। मतलब है, होम तो हो ही गया, हर्थ का मतलब यही सब है, बंधु बांधव Home and related things. है। हम्म Home and its related things. हाँ, रिलेटेड थिंग्स। जी। हाउस जी। नहीं वर्ड यूज किया है, होम वर्ड यूज किया है हाँ। हिंदी में जी। ये, है ना, जी। जी। एंड रिलेटेड थिंग्स। यस। तुमने देख भी लिया, है ना। जी। वेरी गुड। A per- जी। अ पर्सन शुड नॉट बी इन द रिनाउंस। इसीलिए जिया कहते हैं कि जब अचानक कभी कभी विपत्ति आती है, जिन लोग यही जिया ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अचानक आपका घर आपसे छीन लिया जाए, आपका धन आपसे छीन लिया जाए, तब आप मजबूर होते हैं गॉड के ऊपर डिपेंड होने के लिए। और उसी समय जब आप मजबूर होकर गॉड के ऊपर डिपेंड होते हैं जिया जी, तब आपको एक्चुअल फ्रीडम समझ में आ जाती होगी, क्योंकि ऐसे तो आप घर छोड़ ना पाते। है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जी। वो भी अपन। मालूम है क्या है, क्या नाम है, जी। वो डिपेंड करता है भगवान की मर्जी के ऊपर। अदरवाइज अगर माया के प्रकोप में रहेगा तो आप लेमेंट ही करते रहोगे, क्या हम्म। भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मेरे साथ क्यों किया, है, हम्म। मैं तो बहुत अच्छा था। हम्म। लेकिन और जीजा जी, यही तो समझने का स्तर है। यही तो है, ये देखो समझने का स्तर। धृतराष्ट्र को कहाँ समझ में आया, जी। 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 उन्हीं को समझ में आ गया, धृतराष्ट्र को जी। नहीं समझ में आया, दोनों भाई थे। बिल्कुल। जीजा जी, हम ही लोगों को देखिए भी लाइफ में कितना समझ में आता है। हमारे को तो नहीं आया समझ में, आई एम नहीं नहीं, फ्रेंकली लेकिन ये एडमिटिंग। मेरा कहने का मतलब है कि अभी हम लोग ये सब पढ़ के इन्वायरमेंट बना रहे हैं,
लेकिन फिर भी जब वो चीजें पड़ेंगी एडवर्स, तो वैसा ही फील होगा जिया जी जैसे धृतराष्ट्र को फील हो रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे हम जागृत होंगे तब समझ में आएगा। मेरे को जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, जी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ना, मैं हम्म। मेरे को तो अभी भी बहुत तगड़ा लिमिटेशन होता है और हो हम्म। जाता है, लेकिन अभी फर्क क्या हो गया है, वो हम्म। लिंगर नहीं करता है बहुत ज्यादा। हम्म। 1-2 घंटे हम परेशान होंगे, है ना, हम्म। फिर उसके बाद आई विल, क्या नाम है, ट्राई टू, आई विल गेट ओवर इट। जी। अब वो और जी जी, लिमिटेशन कब है? ये जो लेमेंटेशन है, ये बट नेचुरल है, क्योंकि देखिए जी जी इतना लाइफ हम उसमें डूब के जी चुके हैं ना, इसलिए, है ना, बिल्कुल पक्का है ये। एकदम से थोड़ी ना समझ में आता है। हाँ, और माया को अच्छा नहीं लग रहा है ना हम्म। कि हम जो है ना, अब ये भागवतम पढ़ रहे हैं, ये मतलब माया भी वैसे तो भगवान की एनर्जी है, ऐसी बात नहीं हम्म। है। जी। तब इसलिए उसका अटैक कम हो गया है, उसकी भी जी। कृपा होनी शुरू हो गई है। हाँ जो तुम बिल्कुल। कह रही हो, क्या नाम है ना, वो बिल्कुल तुम, यू हैव गॉट द, इतना टाइम गुजर गया ना। जी बिल्कुल। लेकिन जीजा जी एक बात आपको बताएं, सोचने समझने का तरीका बहुत सी चीजों को बहुत जल्दी चेंज कर देता है। जब से जिया जी हमने एक इंसिडेंट ये पढ़ी कि एक कोई व्यक्ति जो है कह रहा था कि अरे अब हम 50-60 साल तो इस तरह से जी चुके, अब क्या हमारे अंदर वो चेंज होगा। तो जो दूसरे व्यक्ति ने ये समझाया कि जो आत्मा का ज्ञान होता है जिया जी, ये बहुत तेज होता है अगर आत्मा एक बार आपकी जागृत हो जाए। उन्होंने कहा कि इसको आप ऐसे ही समझिए कि जैसे एक कमरा है, उसमें 100 साल से कोई नहीं गया, लेकिन और 100 साल से अंधेरा था, लेकिन अगर आप एक माचिस की तीली जला दीजिए तो जी जी सेकेंड्स में प्रकाश हो जाता है। हाँ हाँ, ये भी है भैया, दिस इज नहीं वेरी तो करेक्ट। ये भी जानते हैं, हम लोग को इस तरह की चीजें मान के चलना पड़ेगा और इन पे विश्वास करना पड़ेगा, तभी तो हम जागृत हो पाएंगे। जी। यस, वेरी गुड थिंग टू से। हाँ। जी। A person should not be in the renounced order of life unless he is firmly convinced of being protected by the Lord. The stage of life is explained in Bhagavad Gita as Abhyam Sattva Samsuddhi. हम Uh, every living entity, every living entity is factually completely dependent on the mercy of the Lord, but unless one is in the pure state of the existence, he cannot be established in this position. The stage of dependence is called Sattva Samsuddhi, or purification of one's existence. The result of such purification is exhibited in fearlessness. A devotee of the Lord who is called Narayan Para is never afraid of anything because he is always aware of the fact that the Lord protects him in all circumstances. With this conviction, Vidu traveled alone and he was not seen or recognized by any friend or foe. Thus, he enjoyed freedom of life without obligation to the many duties of the world. अब हिम्मत तो जी जी चाहिए ही, जिस तरह से सारी चीजों को विदुर छोड़ के चले गए, या कोई भी अगर छोड़ के चला जाता है तो भाई ये हिम्मत का काम तो है ही है। अब ये एक चीज और भी जो है यहाँ पर, वो तो है जी। ही है, तभी तो जी। उनको फियरलेसनेस हो गई। यहाँ जी। पर जो बात कही है ना, इसमें बड़ा दम है। हम्म। अभयम सत्व समुद्र भी, है ना। अब आप हम्म। देखो ना, ये हम लोग जो है ना, मतलब हम वो नहीं है, प्योर स्टेज नहीं आ पा रही, तभी तो भय होता है, बीच बीच में लेमेंटेशन जी। होता है, भय होता है, हाँ, हाँ। इसलिए होता है ना। हम्म। जी। लेकिन ये उस पाथ पे भी आप आ गए हो, तब भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ही कैनॉट बी एस्टेब्लिश इन दिस पोजीशन, है ना। हम्म। unless one is in a pure state of existence, he cannot be established in this position, है ना। हम्म। This state of dependence is called sattva samuddhibi, हम्म। purification of one's existence, and the result of such purification is exhibited in fearlessness. The हम्म। beauty of the Lord, who is called Narayan Para, is never afraid of anything because he is always aware of the fact that Lord protects him in all circumstances. अब हम्म। इस स्टेज पे जब आप ये शरणागति की स्टेज है, हाँ। यस। ये शरणागति की स्टेज। बिल्कुल। अब जब आपकी शरणागति की स्टेज, तब तो फियरलेसनेस तो फिर कहाँ यार। हम्म। भगवान जहां पर है वहां भय का क्या काम है। हम्म। अब जी। मेरा नंबर है, हैं? जी।
तो जी अभी एक पैराग्राफ और है। हाँ, यस, सॉरी सॉरी। With this conviction, Vidra traveled alone, and he was not seen or recognized by any friend or foe. Thus, he enjoyed freedom of life without obligation to the many duties of the world. When Lord Krishna was personally present in the mortal world in his eternal blissful form of Syam Sundar, those who were not pure devotees of the Lord could not recognize him or know his glories. Uh, अवज अवजा नान्ति अज्ञानान्ति मामम माम मुधा मुधा मा अ, मुषिम मानुषिम तनुम ताम। आश्रितम. He is always bewildering to the non-devotees, but he is always seen by the devotees by dint of his pure devotional service to him. यहीं पर देखो ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरा है ना। जी. तो यहाँ पर जो ये चाह रहे हैं, इवन भगवान कृष्ण जब इस धरती पे थे, हम्म. मोस्ट ऑफ द लोग उनको नहीं मान रहे थे भगवान। जी. वहां पर पांडव भी, ब्रदर्स भी थे और कौरव भी थे। हाँ. लेकिन कौरव ने नहीं माना उनको, मतलब वो नहीं समझते थे बिल्कुल. कि ये भगवान है ना। विदुर ने समझ लिया, लेकिन क्या नाम है, धृतराष्ट्र ने नहीं समझा। हम्म. भीष्म देव ने बिल्कुल समझ लिया, और बाकियों ने नहीं समझा। नहीं समझा. है ना। जी. तो ये जो है ना, और वो आज तक हो रहा है। जी अभी भी हो रहा है जी जी. अभी भी है, अभी भी वही चीज है। वैसे नॉन बिलीवर्स तो भरे पड़े हैं अपने इंडिया में ही, इन द लैंड ऑफ कृष्णा। उनके आ करके भगवत गीता बताने के बावजूद भी ऐस मतलब उसका उल्टा सीधा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, लाइक दैट। हाँ। हम्म. जी. टेक्स्ट 43। हाँ. नूनम नृपाणाम त्रिमदोत्थपथानाम महीम मुहुश्च चालयताम चमूभिः वधात्प प्रपन्न अपेक्षताघम भगवान कुरु राम। जी. नूनम नपाणाम त्रिमुदोत्पथानाम महीम मुष्र चालयताम चमूभिः वधा वधा वधात वधात प्रपन्न ही प्रपन्न ते जिहिर्ष येषो प्युपेक्ष ताघम भगवान कुरुणाम. Despite his being the Lord and being always willing to relieve the distress of sufferers, he refrained from killing the Kurus, although they committed all sorts of sins, and although he saw other kings constantly agitating the earth by their strong military movement carried out under the direction of three kinds of false pride. अच्छा, हम्म. भगवान ये सब अलाउ कर रहे हैं अपने हम्म. भक्तों के सामने। हम्म. कौरवों को नहीं मार रहे हैं, खुद नहीं मार रहे हाँ. हैं। जी. हाँ, जी. नॉट अपीयर वांट टू बी अपीयर कर में, मतलब वो फिर ही सॉ अदर किंग्स कॉन्स्टेंटली। बाकी जो राजा लोग जो है तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे चारों तरफ, हाँ. वो वो क्या नाम है, मतलब उनको भी वो कुछ खास नहीं, उनको नहीं कर रहे थे कुछ। हम्म. है ना। जी. परपोज as declared in Bhagavad Gita, the Lord appears in the mortal world to execute his much needed mission of killing the miscreants and giving protection to the suffering faithful. In spite of that mission, Lord Krishna tolerated the insult to Draupadi by the Kurus and injustice perpetuated against the Pandavas, as well as insults to himself. हम्म. The question may be raised, why did he tolerate such injustice and insults in his presence? हम्म. Why did he not chastise the Kurus immediately? हम्म. When Draupadi was insulted in the assembly by the Kurus by their attempt to see her naked in the presence of all,
The Lord protected Draupadi by supplying an unlimited length of clothing, Hmm. but he did not chastise the insulting party immediately. Hmm. This silence of Lord did not mean, however, that he excused the offenses of the Kurus. Hmm. There were many other kings on the earth who had become very proud of the three kind of possessions: wealth, education and followers. ये three kinds of pride जो है ना, false pride, जी। ये भी ईगो का यही, false ईगो का हाँ, यही, बिल्कुल। wealth, education and followers. हम्म, ये भी बहुत है. Hmm. And they were constantly agitating the earth by movement of military strength. Hmm. The Lord was just waiting to get them together on the battlefield of Kurukshetra and kill them all at one time, just to make a shortcut in his killing mission. Hmm. That godless kings or head of state, when puffed up by advancement of material wealth, education, and increase of population, always make a show of military strength and give trouble to the innocent. Hmm. When the Lord was personally present, there were many such kings all over the world, and he thus arranged and he thus arranged for the battle of Kurukshetra. In his manifestation of Vishwarup, the Lord expressed his mission of killing as follows: I have willingly descended on the earth in my capacity of inexorable time in order to decrease the unwanted population. मतलब काल के रूप में आए हैं वो, आते हैं. I shall finish all those who have assembled here except you, the Pandavas. This killing does not wait for you to take part in it. It is already arranged. All will be killed by me. If you want to become famous as the hero of the battlefield and thus enjoy the booty of war, then, O Savyashachi, just become the immediate cause of this killing and take the credit. I have already killed all the great warriors, Bhishma, Drona, Jayadratha, Karna, and many other great generals. Do not worry, fight the battle and be famous as a ग्रेट हीरो. है ना, इस टाइप का बात जो है ना, भगवान और गुरु ही कर सकते हैं. बिल्कुल। The Lord always want to see his devotees as the hero of some episode which he himself performs. He wanted to see his devotee and friend Arjuna as a hero of the battle of Kurukshetra. And thus he waited for all the miscreants of the world to assemble. That and nothing else is the explanation of his waiting. हम्म। ये हम्म। क्या? जी। अजस्र जन्मोत्पत्तनाशानाय नाशनाय कर्माण्य कर्तुर कर्तुर्ग्रहणाय पुंसाम पुंसाम नन्यव न्यथा को हरति देहयोगम परो गुणानामुत कर्म कर्मतंत्रम. हम्म। अजस्य जन्मोत्पत्तिनाशनाय कर्माणि कर्तुर् ग्रहणाय पुंसाम नन वन्यथा कोर हर्ति देह देह योगम परो गुणानामुत कर्म तंत्रम. The appearance of the Lord is manifested for the annihilation of upstarts. His activities are transcendental and are enacted for the understanding of all persons. Otherwise, since the Lord is transcendental to all material modes, what purpose could he serve by coming to earth? हम्म. Purport: Ishvara Parama Krishna Satchidanand Vigrah Brahma Samhita 5.1. The form of Lord is eternal, blissful, कहाँ पहुंच गया? In eternal, blissful, and all knowing.
His so-called birth is therefore an appearance only, like the birth of the sun on the horizon. His birth does not, like that of living entities, take place under the influence of material nature and the bondage of the reactions of past deeds. His works and activities are independent pastimes and are not subject to the reactions of material nature. In Bhagavad Gita 4.14, it is said, Namam karmani lim, limpanti na me karma phale spraha iti mam yo bhijanati karma bhair na sa madhyate. Hmm. The law of karma enacted by the Supreme Lord for the living entities cannot be applied to him, nor has the Lord any desire to improve himself by activities like those of ordinary living beings. Ordinary living beings work for the improvement of their conditional lives. But the Lord is already full of all opulence, all strength, all fame, all beauty, all knowledge, and all renunciation. Why should he desire improvement? No one can excel him in any opulence, and therefore the desire for improvement is absolutely useless for him. One should always discriminate between the activities of the Lord and those of ordinary living beings. Thus, one may come to the right conclusion regarding the Lord's transcendental position. One who can come to the condition of the Lord's transcendence can become a devotee of the Lord and can at once be free from the reactions of the past deeds. It is said that karmani nirdhati kintu cha bhakti bhajam. The Lord Hmm. minimizes or nullifies the reactionary influence of the devotee's past deeds. अब देखो ना Hmm. यार कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। Hmm. हाँ, आपके पुराने जी। पाप भी खत्म कर देते हैं भगवान, है ना। जी। ये है बड़ा मतलब बहुत, ये Hmm. जो है वो हर एक अगर ये आप समझ जाए ना कि भगवान कृष्ण तो उनका अलग है भाई, वो इज ऑल ब्यूटी ऑल फेम ऑल नॉलेज एंड ऑल दैट है ये बात। जी। द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड आर टू बी एक्सेप्टेड एंड रिलीज्ड बाय ऑल लिविंग एंटिटीज। हिज एक्टिविटीज आर टू अट्रैक्ट द ऑर्डिनरी मैन टुवर्ड्स द लॉर्ड। The Lord always acts in favor of the devotees, and therefore, ordinary men who are fruitive actors or seekers of salvation may be attracted to the Lord when He acts as protector of the devotees. है ना? The fruitive actors can attain their goals by devotional service, and the salvationist can also attain their goal in life by devotional service to the Lord. The devotees do not want the fruitive results of their work, nor do they want any kind of salvation. They relish the glorious superhuman activities of the Lord, such as his lifting Govardhan hill and his killing of demon Putna in infancy. His activities are enacted to attract all kinds of men, karmis, jnanis, and bhaktas. Because he is transcendental to all laws of karma, there is no possibility of his accepting a form of Maya as is forced on the ordinary living entities who are bound by the actions and reactions of their own deeds. तो Hmm. ये अच्छी बात बता रहे हैं कि भैया देखो ना, वही तो वृंदावन में और वहां पर यही हो रहा था ना, सारे लोग जो है बस कृष्णा जो कह दे वही होएगा बस। उन्होंने कहा Hmm. कि तुम लोग डरो नहीं, इससे इंद्र की पूजा बंद कर दो। उन्होंने Hmm. पूजा बंद कर दी, मान गए, उसके फादर भी मान गए, वासु वो जो नंद महाराज, वो पानी बरसा रहे, उन्होंने गोवर्धन हिल उठा लिया, कहते सब लोग आ जाओ नीचे, सारे आ गए, है ना। Hmm. है उनका उनका जो है ना वो सब ज्ञानी और कर्मी भी थे उन्हीं में, सब में, Hmm. है ना। ज्ञानी कर्मी और भक्त सारे थे उस टाइप के लोग। The secondary purpose of his appearance is to annihilate the upstart asuras and to stop the nonsense of atheistic propaganda by less intelligent persons। वो आकर यहाँ पे इसीलिए लीला करते हैं। By the Lord's causeless mercy, the asurs who are killed by the personality of Godhead get salvation.
The meaningful appearance of the Lord is always distinct from the ordinary birth. Even the pure devotees have no connection with the material body. And certainly the Lord who appears as he is in his Sachidanand form is not limited by a material form. हम्म यहाँ पर एक और बड़ी बात कह दी कि जो जो प्योर डिवोटी है उनका तो बॉडी से कनेक्शन उनका भी टूट चुका होता है। हम्म, रह रहे होते हैं वो शरीर में, जी लेकिन उनका उस शरीर से कोई संबंध नहीं होता है हम्म ना। बिल्कुल टेक्स्ट 45 तस्य हम्म, प्रपन्न खिल लोकपानाम अवस्थितानाम अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्ताम सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ते। जी तस्य प्रपन्ना खिल लोकपानाम वस वस्थिता वस्थिता नाम अनुशासने स्वे अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे तय कीर्त तीर्थ कीर्ते। कीर्तय तीर्थ कीर्ते। O my Lord, please therefore chant the glories of the Lord, who is meant to be glorified in the places of pilgrimage. He is unborn and yet appears by his causeless mercy upon the surrendered rulers of all parts of the universe. Only for their interest did he appear in the family of his unalloyed devotees, the Yadus. हम्म Support. There are innumerable rulers all over the universe in different varieties of planets. The sun god in the sun planet, the moon god in the moon planet, Indra, heavenly planet, Vayu, Varun, and those in the Brahmalok planet where Lord Brahma is living. All are obedient servants of the Lord. Whenever there is any trouble in the administration of innumerable planets in different universes, the rulers pray for an appearance and the Lord appears. है ना? हम्म The Bhagavatam 1.3.28 has already confirmed this in the following verse. हम्म एते चांस कलाह पुंसः कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इंद्रारि वैकुंठ व्याकुलम लोकम मृदयंति युगे युगे। In every millennium, whenever there is any trouble for the obedient rulers, the Lord appears. He also appears for the sake of his pure and alloyed devotees. The surrendered rulers and pure devotees are always strictly under the control of the Lord, and they are never disobedient to the desires of the Lord. The Lord is therefore always attentive to them. The purpose of the pilgrimages is to remember the Lord constantly, and therefore the Lord is known as Tirtha Kirti. हम्म Purpose of going to the a place of pilgrimage is to get a chance to glorify the Lord. Even today, although times have changed, there are still pilgrimage sites in India. For example, in Mathura and Vrindavan, where we had a chance to stay, people are awake from the early in the morning at 4 a.m. up until night time and are constantly engaged, some way or the other, in chanting the holy glories of the Lord. The beauty of such a pilgrimage site is that automatically one remembers the holy glories of the Lord. His name, fame, quality, form, pastimes, and entourage are all identical to the Lord, and therefore chanting the glories of the Lord invokes the personal presence of the Lord. Any time or anywhere where pure devotees meet and chant the glories of the Lord is present without any doubt. It is said by the Lord Himself that He always stays where His pure devotees chant His glories. Thus end the Bhakti Vedant purport of the third canto
first chapter of the Srimad Bhagavatam entitled Questions by Vidur. हम्म है ना? तो ये जी भगवान की महिमा। हम्म भाई वो जो है करते हैं अपने अपने डिवोटीज का कल्याण करने में बहुत ज्यादा वो इंटरेस्टेड है ना? जी और डिवोटीज हैं, हम्म नॉट क्लियर एनीथिंग। तो वेरी गुड, क्या नाम है ना? अब हम्म, नेक्स्ट चैप्टर, ये जो है ना विदुर जो जी है ना, ये कर रहे हैं। अब चैप्टर 2 तुम पढ़ो भाई। जी श्रीशुक उवाच हम्म इति भागवतः पृष्ठः छत्रा वार्तां प्रियाश्रियां प्रति वक्तुं वक्तुं च चुत्सेह औत कठ कठि कट कठ कठि कंठ अच्छा कंठिया। कंठ या तस्मारी तेश्वरा हम्म जी इति भागवता पृष्ठा हाँ सा वार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत कंठ यात स्म ऋतेश्वरः। हम्म विश- ठीक जी हाँ हाँ ये हो गया आपका हाँ, मेरा तो हो गया, मैंने तो तुम्हारे को फॉलो किया। हाँ, तुम्हारा। ओके Sri Sukdev Goswami said, when the great devotee Uddhav was asked by Vidur to speak on the messages of the dearest Lord Krishna, Uddhav was unable to answer immediately due to excessive anxiety at the remembrance of the Lord. देखो ना, उद्धव जी भी जो थे ना, वो जो भगवान के विरह में, भगवान उस समय उनको इनको पता नहीं ना, विदुर जी को। Hmm. तो भगवान के विरह में वो बेचारे थे, तो वो तो एकदम वो नहीं, जी तुरंत नहीं बोल पाए, उनका गला वाला भर गया होगा, है ना? हाँ, जी जी यह यह पंच हयानो मात्रा प्रात राशाय याचिता तंत्रैच चयन यस्य सर्पयाम बाल लीलया पंच हायनु मात्रा प्रातराशया याचितः तन्नैच्छ द्रच्छ यन यस्य सर्प्यां बाललीलया। He was one who even in his childhood at the age of 5 years was so absorbed in the service of Lord Krishna that when he was called by his mother for morning breakfast he did not wish to have it. Acha. From his very birth, Uddhav was a natural devotee of Lord Krishna or a Nitya Siddh, a liberated soul. From natural instinct, he used to serve Lord Krishna. Even in his childhood, he used to play with dolls in the form of Krishna. He would serve the dolls by dressing, feeding, and worshipping them, and thus he was constantly absorbed in the play of transcendental realization. There are the signs of an eternally liberated soul. An eternally liberated soul is a devotee of the Lord who never forgets him. Human life is meant for reviving one's eternal relation with the Lord, and all the religious injunctions are meant for awakening this dormant instinct by the instinct of the living entity. The sooner this awakening is brought about, the quicker the mission of human life is fulfilled. In a good family of devotees, the child gets the opportunity to serve the Lord in many ways. A soul who is already advanced in the devotional service has the opportunity to take birth in such an enlightened family. This is confirmed in Bhagavad Gita 6.41. सच्ची सुचि नाम, सच क्या कह रहे हैं जय जी सुचि नाम। हाँ सुचि नाम श्री मताम राम गेहे योगी गेहे भ्रत्सतो भ्रष्टो विद्याते. Even the fallen devotee gets the opportunity to take birth in the family of a well-situated Brahmana or in a rich, well-to-do mercantile family. In
both these families, there is good opportunity to revive one's sense of God consciousness automatically, because particularly in these families, the worship of Lord Krishna is regularly performed, and the child gets the opportunity to imitate the process of worship called uh, अर्चना अर्चना। Archana. Ji. तो पंच रात्रि की, हाँ। हाँ. The pan पंचरात्रि की। Pancharatri formula for training person in devotional service is temple worship, whereby the neophyte get the opportunity to learn devotional service to the Lord. Maharaja Parikshit also used to play with Krishna dolls in childhood. Acha. In India, the children in good families are still given dolls of the Lord, like Ram and Krishna, or sometimes the demigods, so that they may develop the attitude of service to the Lord. By the grace of the Lord, we were given the same opportunity by our parents, and the beginning of our life was based on this principle. हाँ, यहाँ पर ना ये बड़ा बात बताइए, उद्धव जी जो थे ना, ये बड़े मतलब वहां पे वृंदावन में ही बड़े यूनिक थे। हम्म. हाँ, बचपन से ही भगवान, जब दोनों जन छोटे थे, एक ही उम्र के थे, लेकिन तब भी वो मतलब कृष्ण के बारे में ही वो खेलते रहते थे, हम्म. उन्हीं की इमेज वगैरह को लेकर के कैसे हम्म. कैसे, वो तो है। जी. और यहाँ पर जो है ना, ये इन्होंने अपना अपनी चाइल्डहुड के बारे में प्रभुपाद ने बताया है जी. कि बचपन में इनको क्या नाम ना, इनके फादर ने मतलब छोटा सा एक रथ दे दिया, और हम्म. जगन्नाथ जी की तीन मूर्तियां छोटी छोटी दे दी, तो ये पूरा रथ यात्रा करते थे अपने मोहल्ले में। हम्म. और जितने भी नेबरहुड के जो जो लोग थे ना, और लेडीज जो होती थी, हाँ. हाँ. प्रसादम बना करके देती थी और उनको चढ़ाती थी, और फिर ये हाँ. प्रसादम बांटते थे बचपन में ही। मतलब ये इनकी बहन और इनके जितने भी दोस्त थे ना मोहल्ले के, जी. जी. रथ यात्रा करते थे बिल्कुल उसी तरह की। एंड यू सी उसका असर क्या हुआ कि उन्होंने, प्रभुपाद जी ने बाद में रथ यात्रा, पहले जगन्नाथ रथ यात्रा जो है दुनिया में कहीं नहीं होती थी एक्सेप्ट फॉर इन पुरी में, एक ही हम्म. साल में निकलती थी। और हम्म. उन्हें लेकर जगन्नाथ जी को इन्होंने सारी दुनिया में पहुंचा दिया। अब सैन फ्रांसिस्को में पहली रथ यात्रा हुई आउटसाइड द जगन्नाथपुरी, सैन फ्रांसिस्को। अच्छा. हाँ, उसके बाद तो अमेरिका के हर बड़े शहर में होती है, हर बड़े, हाँ. न्यूयॉर्क, बोस्टन, डैलस, सब जगह पे। हाँ. में भी होती है, अब तो सारी दुनिया में होती है, दिल्ली में तीन तीन चार चार बार होती है। जी. भगवान भगवान जगन्नाथ इतने कृपालु है कि हम्म. तो कहते हैं भैया हमारे डिवोटीज नहीं आते, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, बाहर निकल के आते हैं मंदिर में, हम्म. खुद आते हैं, कर भाई वो इतने दयालु हैं, है ना। हम्म. तो ये जो है ना, ये बड़ा बड़ा अच्छा है। तो आज हम्म. यही समाप्त करते हैं, बहुत अच्छा जी. था है। जी. जी. इट इज वेरी नाइस टू जी. लिसन है। जी. हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.